Assalamu alaikum and a good afternoon to everyone. Today with you is Abiha Fatima, student of Kausar College, attending IGCSE 2 classes. And today with us is the most known, famous personality, which is none other than her Mem Razia Najafi. And good morning, how are you? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, I'm good. So I'll start with, how's the energy today? How are you feeling? Yeah, brilliant. Brilliant. Okay. So today I'm going to be asking you some questions that I think me and a lot of people out there are interested, right? So we're going to be asking short questions. First question, what are your hobbies? My hobbies, whenever I get time, I would love to exercise, especially hiking, jogging, and running and playing some games with my boys and my family. Great. So you're a sports person. Yes. How about traveling? Oh, that I'm so fortunate that I got it as a gift from Allah Tabaraka wa Ta'ala, because my duties, required to be travel in many places of the world. So automatically, alhamdulillah, I'm enjoying this world, and inshallah hereafter by traveling and by preaching and propagating the message of Islam. Oh, inshallah. Yeah, inshallah. Other than that, your favorite color? Like mine is navy blue. How about you? Okay, you are wearing the same Yes. color, yeah, mashallah. Yeah, mine is white because of Pure. Yeah, Purity, I see. And what about favorite ayat? Your favorite ayat, and yeah, why? it's really tough to choose any ayah because, mashallah, Quran is Quran, no doubt, but. Simple and very, like the ayah which always very, very near to my heart is that this is the beautiful message of our Prophet Ibrahim, the Inni la uhibbul afilin. The way he says, I don't like temporary things. I like everything, permanent. Permanent. Yeah? So, because in this world, when we are living in this world, we have so many choices. हमें या ये करें या वो करें, क्या करें, कहाँ जाए, क्या खाए, क्या. So everywhere I say, hey, inni la uhibbu afilin. Yeah, I don't want something which will not remain. So the way Quran says, on the akhirah, hereafter. So when you focus about hereafter, then automatically you enjoy more this worldly life and all the blessings of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yeah. Like the worldly things will just disappear and only deen will stay. Exactly. Next question is related to deen though. Like, you chose the path to deen as like, I think your career and your lifetime career is like deen. Did you choose it because of your father, or was it your own choice? Did you take his footsteps? It's a bit tricky question because we are mashallah 9 brothers and sisters. Oh, mashallah. So हम में से 4 जो है वो नजफ़ में पैदा हुए. So हम जो नजफ़ में पैदा हुए 4, we get more chance to spend time with our especially father, because शुरू में उनके पास थोड़ा time, energy more, and बाकी जब बच्चे बड़े हुए तो उनके पास इतना time नहीं था. So I think हम सब पर हमारे फादर का ऑटोमेटिकली बहुत इन्फ्लुएंस है. इस तरह से है कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी देखकर, अच्छा उन्होंने कभी नहीं कहा, never ever. I remember I was very, very young in grade 6, 7, and my elder sister, वो पहले से ही ईरान गई हुई थी, पढ़ रही थी. तो I think वो आई हॉलीडेज़ में इधर. सो मैं स्कूल जा रही थी तो मैंने कहा है मैं भी ना चली जाऊँ साथ. आई रियली, और उस वक्त इतने स्ट्रिक्ट नहीं था ये सब कुछ कि आप आई हैव टू डू ओ लेवल्स और मैट्रिक, नथिंग, द रूल्स वर नॉट देयर. सो इसलिए मैंने अप्लाई कर लिया और बाबा ने खुशी खुशी मुझे भेज दिया. सो आई थिंक बाबा की पर्सनैलिटी देख कर हमें दिल चाहा, बिकॉज ही वॉज सो kind, and his authority, his power,
मुझे याद है वो हमेशा एक जुमला कहते थे कि देखें, ही यूज्ड टू कॉल मी मामा देखें, जितने भी लोग हैं, क्योंकि उनका जो उसवा स्कूल सिस्टम का जावेद बिन हयान पूरा ट्रस्ट और सब, तो उसमें काफ़ी आर्मी वाले भी हैं, हर फील्ड के स्पेशलिस्ट, सो ही इज़ गिविंग डायरेक्शन टू ऑल ऑफ देम, लाइक अंडर हिज अम्ब्रेला वो सब के सब somehow लोगों की सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं. So we need that someone with that divine thoughts and yeah. So that kind of like beautiful mindset we had, that I really want to be there, inshallah. Then many people can work for right direction. Whatever skill people have, we can utilize them for serving the society and Islam. Yeah. Wow, mashallah. Many memories you have with him, I see. It's like looking at the memories and our beloved Agha Mohsin, who's not with us but would always remain in our heart. Something that I thought myself too. And I would ask you too, if you had a day, if Allah would give you a day with your father, only a day, what would you do? One more day with your father, what would you do? Where would you go? What would you tell him? What are you going to do? One day. One more day. Oh. मैं उनकी लाइफ में भी कहती थी कि मेरा दिल चाहता था उनके दिल में उतर जाऊं, बिकॉज उनके दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत थी ना, तौहीद, अल्लाह से प्यार कितना मीठा है, कितना मज़े का है. वो बाबा को देख के एहसास होता था कि अल्लाह इतना प्यारा है, क्योंकि इतना प्यार जो वो सबको दे रहे थे, तो वो असल में रिसीव कर रहे थे अल्लाह से. ठीक है, वो जो एक जो पावर थी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी डिसीजन और विजन में, सो वो सब वहीं से आया था डायरेक्टली. तो इतना इंसान को लगता है, मैं हमेशा उस दिन इनके दिल में कितना प्यार है. उनको मैं अक्सर सजदों में देखती थी तो मैं कहती थी, अल्लाह, जब बाबा कहते हैं या रब, दैट मीन्स एक्चुअली या रब और या अल्लाह. मैं जब कह रही हूँ, आई डोंट नो किसको पुकार रही हूँ कब, बट उनका जो कनेक्शन था, जो that was outstanding. Yeah, we can't describe it. So but definitely I would love to spend time with him by knowing more about some technical skills and points about how to write the tafsir of Quran, because we discussed it before, I think 10 years before, and he told me some tips. And then मुझे जाना पड़ा वापस अपनी स्टडीज़ कंटिन्यूज़ करने के लिए. मैं उस वक्त इस्लामाबाद में थी when I started KCW. तो मैंने कुछ बुक्स ली और मैंने कुछ टेक्निक सीखी. तो मैंने कहा ना, फिर मैं अभी नहीं कर सकती, मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा. मैंने कहा जब मैं पाकिस्तान वापस आऊँगी ना, बाबा के साथ बैठ के, then I will do it. I was just thinking, and I was just looking for a day कि मैं उनके साथ इस टॉपिक पे डिटेल में बात करूँगी. But I couldn't get a chance. So, yeah, I was just begging my mom कि बाबा मुझे सजदों में ख़ास दुआओं में याद रखते थे, मेरी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि वो बहुत कम लोगों के लिए दुआ करते थे और बहुत ख़ास लोगों के लिए. So मैंने अपनी मामा से कहा, अब आपने करना है. और शी इज़ सो हम्बल, शी सेज़ मेरे पास क्या है. I said, no, you are my mom, and mashallah, she's so ba'amal. And I asked her that I really want to write a book about tafsir, because that was my baba's dream too, कि मैं tafsir for women, या ख़वातीन के लिए जो एक तफसीर होती है, especially those आयात जो हमसे related हैं and everything. So inshallah उसको मैंने बहुत जल्द complete करना है. So मेरे दिल चाहता है उसके बारे में बस काश I could get more chance to sit with him. Yeah. Future book coming up. Look up to it, everyone. So I think that's the biggest flex I could make, that being in Kausar College for Women, I had more time with Agha Mohsin than any person outside. I could avail my time with him and get more knowledge, so I could show off with that. You can join too. You could show off with more things in the future, inshallah. Okay, other than that, we're going to my most favorite topic, which is food, because I'm a foodie. What's your taste in food? Your favorite food?
Yeah, even I'm inspired when it comes to food by my Baba because I don't know, मैं हमेशा उनको देखती थी ना, वो बड़ा वही वाली बात के खाने के लिए ना जियो, जीने के लिए खाओ. So वो food को as a therapy, you know, cure के लिए, medicine के तौर पर इतना cherish करते थे चीज़ और उसको इतना enjoy करते थे कि ये मुझे कितनी, you know, बरकतें दे रहा है. Because of this food, I will be more energetic and I will serve more. So therefore, I remember once he was eating some olives. I think Lebanon या कहाँ से आए हुए थे, बहुत वो bitter से भी होते हैं ना जो ओरिजिनल. तो काफ़ी आप जब यंग हो तो आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना, कड़वी. और सो द वे ही वॉज एन्जॉइंग दोज ऑलिव्स, जो फ्रेश ऑलिव्स खा रहे थे, तो मैंने भी खाया, मुझे इतना मज़ा लगा. मैंने कहा ये तो बिल्कुल मज़े का नहीं, लेकिन बाबा को देखा तो मुझे इतना मज़े का लगा. फिर मैंने उनसे सीखा माइंडसेट बदलना. देखिए मुझे अब आ गया, उसके बाद मैं भी स्विच कर लेती हूँ. ये तो शजरा ज़ैतून, you know, Quran has mentioned about it. I just love it. तो मैं प्यार कर लेती थी ऐसे खानों से. तो होते होते ये अर्ली टीनेज से ही शुरू हुआ. तो अब मैं ज़्यादातर healthy food like Baba and seafood because his favorite was seafood. So my favorite is seafood too, yeah. Okay. Other than that, having a question before about traveling and all that stuff. I've heard you've been to Mount Kilimanjaro. Yeah, alhamdulillah. Yeah. How is it? I want to know. Such a famous place, I know. Yeah, the roof of Africa. Yeah, that was again, even my husband, mashallah, he's Alim too, and he belongs to Nanga Parbat Valley. Just beneath that Nanga Parbat is his hometown. Yeah, I think they call it the Trishing or Rupal Trishing. There are two valleys are there. So he's a very, mashallah, is like, you know, like my teacher in climbing and in exercise and in energy. So when my few friends, they were wanted to climb Mount Kilimanjaro, I asked my Agha, and my Hussein was so young, like I was breastfeeding him, but still, you know, I wanted to go all the way from Iran to Tanzania. And my friends they were all local, you know, they are from Tanzania. But I said, no, I will go. And that was before Muharram, you know, and I supposed to go to Toronto. So it was so tough. Like, you know, you have to go from Iran to Kilimanjaro, Tanzania, then to Toronto, you know, so far and very tiring too. But I did it, you know, and my baby was young and I was feeding him. But still, you know, because of my husband, I wanted to do, but he told me, my Razia, Kilimanjaro is nothing for you. My Razia can climb Mount Everest, you know. He's like that, yeah. What a motivation. So interesting thing is that because we were only in Iran and my friends, they were more than 20 and they were doing all of them together, some exercises and training. उनके पास trainer भी था. हमारे पास क्या था, that was so beautiful. वो मुझे मेरे साथ खुशी हरम हज़रत मासूमा के पास हमारा घर था, वहाँ से मस्जिद जमकरान हम वॉक करके जाते थे. इतना इजी पीजी लगता है, लेकिन बहुत दूर है. आई डोंट नो कितने किलोमीटर्स, 20 शायद क्या है, मुझे अब सही याद नहीं. फिर वहाँ एक छोटा सा माउंटेन है, माउंट खिज़र. उसको मैं 2-3 दफ़ा क्लाइंब करती. लोग एक दफ़ा थोड़ा चढ़ते हुए थोड़ा थक जाते, लेकिन वो मेरे साथ एक्सरसाइज करते थे. तो इसी और एक था बूस्तान नरजिस, जनाब मादर ऑफ इमाम ज़मानाज़ नेम नरजिस खातून का एक पूरा गार्डन, सिर्फ लेडीज़ का बाग और पार्क था. तो उसमें मैं बाकायदा जॉगिंग वगैरह करती थी. सो मुझे इतना अच्छा लगा. जमकरान, खिज़र भी, हज़रत खिज़र एंड बुस्तान नरगिस, इन्हें सारा इतना स्पिरिचुअल भी था और फिज़िकल भी था. तो उसमें सब मेरे हस्बैंड को क्रेडिट जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह. Listening to your answer, I feel like male figures have a lot of role in motivation in your life. Absolutely. But other male figures in your life are your sons that you have just said, one Hussein, I guess so. So what are you thinking of them? Do you want them to take your religious footsteps, or have you left them on their choice? No, I don't want to leave them completely. You know, like my father and my mother.
I want to give them a beautiful, definitely, a vision in their life. जो भी करे वो अल्लाह के लिए करे, और जिसमें इंटेंशन जो है वो खिदमत हो, लोगों की मदद करना. ठीक है, अल्लाह इससे बहुत खुश होता है, क्योंकि सारी फील्ड्स यही है ना कि आप जब सर्व करो अपनी कम्युनिटी को तो आपको सवाब मिलता है. तो ये बाबा का बहुत ज़्यादा था कि रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ. कहते हम पढ़ते बहुत से लोग हैं, लेकिन हमारा वो पढ़ाई जो भी फील्ड है वो नफ़ा, फ़ायदा, बेनिफिट सबको नहीं देता. बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने वाली फील्ड में जाना चाहिए, जिससे आपके वजूद से बरकत निकले, लोगों के मसाइल हल हो, आप चेंज लेकर आओ, आप रिवोल्यूशन लेकर आओ. दैट इज़ द दुआ ऑफ आवर प्रॉफिट. या सो मेरे बाबा कहते थे कि मैं नजफ़ में यही दुआ करता रहता था, हरम में हमेशा कहता था मैंने इतना पढ़ना है कि जिस पढ़ाई से सबको फ़ायदा हो, जो अल्लाह चाहता है. Not only me, everyone. So, मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, जिस फील्ड में भी जाओ, लेकिन बिल्कुल अपना विजन डिफरेंट रखना, आम लोगों की तरह नहीं. जैसे होता है कमाना है, ओनली दिस, नाम, पोजीशन, नो, वो साइड पे आता जाएगा. हदीस है ना कि आप दुनिया से भागो तो आपके पीछे आती है, उसके पीछे जाओ तो वो आपको थका देती है. सो समथिंग लाइक दैट. But still, I'm praying for them to continue the same path. And I love Mama. One more thing, which is I don't know, unique about me in that sense कि मेरी बहनों में कोई भी इतना पागल नहीं है जितनी मैं पागल हूँ. मुझे क्रेज़ के हद तक बहुत ज़्यादा अम्मा में से मोहब्बत है. I love it. मेरे हस्बैंड भी देर से मर्जी होती है पहनने में ना, कब आप पहनो, तो बहन से हमेशा कहती मेरी तमन्ना है आप जल्दी पहने समथिंग लाइक दैट. और बस मुझे अम्मामे वाले से मेरे शादी करनी, अम्मामे वाले के साथ मैंने रहना. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो जितनी लाइफ गुजर रही है उतना ज़्यादा अम्मामा और इल्म दीन से मोहब्बत है. सो इंशाल्लाह कि तीनों नहीं तो एक तो ज़रूर सर पे अम्मामा बांधेगा इंशाल्लाह. So looking at how your mother and your Islamic scholar and your principal and you're managing so many things, how do you manage family and work? Are you able to give them enough time as a mother and a wife? Yeah, coping with so many duties. It's not really tough for me because of my spouse. Yeah. And my family, because we are so simple. Yeah, our lifestyle is very simple. We don't have any custom or culture or ये तो होना ही चाहिए तो वो तो होना ही चाहिए, nothing like that, So the biggest thing is everyone is just respecting, appreciating others, like duties and whatever requirement, time or, comfort. So when it comes to my mom, I really appreciate her vision about, since we were young, हमेशा कहती थी बस आप लोगों ने पढ़ना है, that's it. Even you can't believe it, our भाभीज, हर बहूज, वो सजदे में रो के कहती मेरी हर बहू पढ़ने जाए, हर बहू प्रीच करे, हर बहू घर से बाहर जाए. होता यूजली मुझे इस एज में पता चला कि उल्टा है. मदर इन लॉज को इतना पसंद नहीं होता कि बहुएं बहुत घूम फिर रही हूँ, बट शी इज़ इन लाइक दैट काइंड ऑफ मदर कि वो पढ़ाने के लिए भेजेंगी, जाओ पढ़ो दैट माशाल्लाह. सो सेम थिंग कम्स टू अस कि हमें भी सब बहन भाइयों कहते हैं ओ राजी जी शी इज़ बिजी, ओ लो जल्दी से उनको कर दे. सब इतना आपको कंफर्टेबल करेंगे कि अल्लाह ये पढ़ रही है, इनको भी यहाँ जाना है, वहाँ सपोर्ट इज़ more than 100% from siblings, from family members, friends, spouse. So life is simple. कुछ भी नहीं है. Nothing extra to be added. So relax easy, life. Yeah, alhamdulillah. See, so it's easy to manage, I guess. And last question that I think is going to be something hard to ask that I have asked a lot of people, but I haven't got a clear answer, is your biggest fear. Everybody has a weak point or a fear. What's your fear? Mine is like being alone or losing someone I love the most. I think we say aqibat bikhairi, like my state of iman when Hazrat Israel will come to capture my ruh. Oh. Yeah, that is. New fear unlocked.
I'm also scared now. You know, sometimes I say to my husband that मुझे ना दिल चाहता है मैं सजदे में हूँ और इस जनाब इज़राइल आए तो कितना मज़ा आएगा. तो वो इतने अच्छे हैं. He tells me कि आप इस तरह क्यों कहती हो. अल्लाह को जो पसंद है वो आपको पसंद होना चाहिए. आप बेड पर भी हो, खड़ी हो, कहीं पर भी हो, इज़राइल आ जाए तो आ जाए. You have to be राज़ी बिरज़ाए इलाही. Look at his you know mindset. Yeah, mine is so beautiful. तो जब मैं अच्छाई चीज़ों में भी ना कुछ चूज़ करती हूँ, सो वो बड़े अदब से, ही इज़ वेरी पोलाइट, यू नो, बहुत कम बोलते हैं लेकिन बड़े अदब से कहेंगे अच्छा आप ऐसे सोच रहे लेकिन नहीं ये भी ज़रूरी नहीं है. So I say wow, next level, you know. Someone is like, Mashallah. say something, you get the opposite and a much better reply. Alhamdulillah. Lucky for you. Alhamdulillah. Lastly, last question but not leastly is the fabulous idea of making Kausar. Because like, I don't think in this modern world anyone would think to make a school that take deen and dunya together. You know, it's hard to schedule. It's very hard to schedule. So are you planning to make another institute similar to this or any other institute that is in your project right now? Yeah, again Baba and Alhamdulillah Baba, everything comes from him and we are just khadim here. Allah करे हमारी खिदमत अच्छी हो. Yeah, but yeah, that is our dream to make some inshallah more branches of this institute, Kausar College for Women, KCW, and many others. Alhamdulillah, our Pakistan University is the next project. Inshallah, सबकी दुआओं से वो तो एक बहुत बड़ा ड्रीम था बाबा का, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी. कोई भी कौम, कोई भी मिल्लत, कोई भी नेशन अगर अपनी आवाज़ या अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी सोच को आम करना चाहती है, कोई भी पैगाम देना चाहती है, उसके पास अगर यूनिवर्सिटी ना हो तो वो कुछ भी नहीं बढ़ सकते. सो हमारे पास अहले बैत के चाहने वालों के पास तकरीबन हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है. या और अफसोस की बात यह है कि लोगों की तो जहन में भी नहीं आता, सोचते भी नहीं है. यहाँ एक बंदा है जिसने एक मैं कहती हूँ एक बंदा है जो एक नेशन की तरह है, या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतनी बड़ी सोच. अल्हम्दुलिल्लाह. और काफ़ी काम उसका तेज़ी से बढ़ रहा है. तो वहाँ पर भी एक जैसे बहुत से ऐसे फील होते हैं जिस पर काम नहीं हो रहा. जैसे इस्लामिक काउंसलिंग हमारे यहाँ नहीं होती. तो हमारा जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हौज़ा के साथ साथ मैं ऐसे डिपार्टमेंट्स खोल रही हूँ इंशाअल्लाह जिसमें ऐसे कोर्सेज़ और ऐसे एरियाज़ पर तवज्जो दी जाएगी जिस पर जो निगलेक्टेड है मोस्टली, यू नो. सो वो जो प्रैक्टिकल और शॉर्ट अच्छे जो कोर्सेज़ हैं, सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आजकल की ज़रूरत है, आजकल की नई, जैसे वही मेंटल हेल्थ जैसी बहुत और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर हमने रिसर्च नहीं की डीपली, ठीक है ना, नहीं की. बहुत कम रिसर्च हुई है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और अहले बैत के लिहाज से. तो इस तरह के रिसर्च सेंटर और ख़वातीन का जो जिस लेवल ऑफ इल्म में उन्हें आगे होना चाहिए और बहुत मॉडर्न तरीके से हर चीज़ ऑथेंटिक तरीके से उनकी तरफ से आनी चाहिए, वो इंशाअल्लाह और ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा इंशाअल्लाह. I myself came from South Africa. देखते like whole Pakistan and I'm like Kausar. Most surprisingly, like Hauza subjects and IGCSE and this subjects and everything was going all together. I'm like, how? It's so magical, such a magical. So I'm expecting more revolution and more schools that a lot of people can attend, inshallah. All because of Bibi Fatima Zahra salamullahi alayha. Alhamdulillah. Last question that I just right now just clicked into my mind is the name Kausar. What's the history behind this? Why Kausar? How was it chosen? Yeah, it was chosen again by Baba. Yeah, Baba Jan. And I think उनकी आप स्पीचेस में, मैसेजेस में आपको मिलेगा कि वही. और आप देखिए उनकी जो रहलत हुई वो भी आफ्टर the birth anniversary of Lady Fatima Zahra salamullahi alayha. You know, that was Kausari ayyam, yeah, Kausari दिनों में ही वो दुनिया से गए. So ये है कि
मुझे याद है जब ये शुरू किया था 11 years बैक KCW, तो वो बार बार ये कहते थे आप मेरी कौसर है, खैर कसीर कसीर, या यू आर माई कौसर मामा जान। ये कौसर यानी जो कश मारता हुआ बरकतें रहमतें जहाँ बिल्कुल हर तरफ फैल रही। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा एक्चुअली द मिस्दाक है उनकी, और उसके अलावा बहुत और उसके मीनिंग्स हैं ना कि जहाँ से भी बरकत निकले उन हस्तियों की वजह से उसको कौसर कहा जाता है। सो उनको पूरा पूरा यकीन था, हमेशा हमेशा हम सबको ये समझाते रहे कि जो भी कुछ है, वट एवर वी हैव, दुनिया आखिरत रूह जिस्म हर तरह की नेमतें सब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वजह से। यानी एक अजीब अक़ीदा, आई डोंट थिंक सो हमें अभी तक ये डाइजेस्ट हुआ है। पता है अक्सर लोगों को सही तरह समझ में नहीं आता, हम कहते हैं, लेकिन वो जो उनकी समझ थी ना, और वो जो कनेक्शन था another level, और उसको फील करते थे। अभी जो प्रोग्राम हुआ था फ़ातिमा सबील निजात, उसमें भी उनका यही था कि अतब अब्बासी वाले आए ही हुक्म जनाब ज़हरा से हैं। that was his like beautiful vision, कितना यकीन अक़ीदे के साथ बताते थे। तो वो जो हर चीज़ को इतना प्यारा कनेक्ट करना, और वाक़ई वो बरक़ात हमें नज़र आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, so like this would be the end of our questions, and maybe next time we could have more interesting questions like this. Personal invite to Kausar, you don't believe, come visit for once and you would see how magical it actually is. Any prayer you'd like to do for us and those viewing? यकीनन दुआ यही है कि इंशाअल्लाह ये जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इसको हम सचमुच मज़रआ बनाएं आखिरत के लिए, फील बनाएं आखिरत के लिए, और बरज़ख के लिए वहाँ को जो आबाद करना है, वहाँ जो रिच बनना है, वहाँ पे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किसके साथ रहेंगे, किन को देखेंगे, कैसे वक्त गुजरेगा, पता नहीं, वहाँ की इज़्ज़त कि शर्मिंदा ना हो, वो वहाँ जूम करना चाहिए हमें। कुरान यही करवा रहा होता है, इधर जूम नहीं करो, उधर करो, ये तो गुजरने वाला है, ये तो ब्रिज है। तो वो हम भूल जाते हैं बस, क्योंकि अगर ये पता चल जाए ना, तो ऑटोमेटिकली एज अ यूथ हमारी यंगस्टर्स ख़ास तौर पर वो जो अपना कैरियर बना रही हैं, जो भी जिस तरह भी प्लानिंग कर रही है, उनकी प्लानिंग में बड़ा असर पड़ता है इस विज़न का कि मैं वहाँ के लिए हूँ, मुझे वहाँ के लिए प्लानिंग करनी है। और ये हो तो बस पूरा कुरान इसी पर ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है, और पूरा नहजुल बलागा बार बार यही कह रहा होता है कि यहाँ ये तो टेम्परेरी है, ये तो ट्रांजिट है। तो ट्रांजिट के बारे में इतनी फ़िक्र ना करें हम सब, इसको ट्रांजिट के तौर पर बहुत अहमियत दें, बहुत अहम है, बहुत प्यारी जगह है, लेकिन वो जो डेस्टिनेशन है उसको हम इंशाल्लाह ना भूलें, इस पर बार बार हम दुआ करें इंशाल्लाह। So this is the end of the session, and I hope that everyone enjoyed and learned a lot. I learned a lot of things and a lot of goals that are next of mine to come over. So yeah, meet you next time with more new questions and more interesting things. Allah Hafiz.